everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss the topic equalization levy, which is one of the most important topics. Even if you see the ICA's trend, ICA keeps asking this question in each and every attempt, and it can go up to 6 months as well. So this topic is very important and it's also very easy topic. So we have covered everything, we have not left anything. Let's get started. तो इक्वलाइजेशन लेवी इसमें ना दो पार्ट है, एक तो TDS रिलेटेड पार्ट, एक TCS. तो एक का परसेंटेज रेट है 6% एंड द अदर वन इज 2%. तो पहले अपन 6% वाले का पढ़ेंगे. तो इन दिस नो इट इज़ काइंड ऑफ ए TDS वेयर अ पर्सन हु इज पेइंग द अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS रेट 6%. व्हेन डज इट पे द अमाउंट? व्हेन जब उसको एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज मिलते हैं ना, तब वो अमाउंट पे करता है. कौन दे रहा है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज? Non-resident, if you see on the screen, non-resident, if he is providing services to a resident, then this resident will pay them money. Okay, at the time of payment he has to deduct TDS at the rate 6%. I hope it is clear. Okay, first thing is that, and then second point is this non-resident should not have a PE in India. ठीक है, जो भी बंदा एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहा है ना, उसको PE इंडिया में नहीं रहना चाहिए. And then he should provide such services to resident, and then he can also provide, a non-resident can also provide services to another non-resident, but that fellow is having PE in India. Okay, so जो non-resident PE in India है, that is actually a resident, right? So if a non-resident is providing services to these two people and the amount is more than 1 lakh, okay, it should be more than 1 lakh. What I'm saying, more than 1 lakh. Even if it is 1 lakh, equalization levy is not applicable. If the amount is more than 1 lakh, only then equalization levy is applicable. Then in that case, you need to deduct TDS rate at the rate 6%. That is equalization levy at the rate 6%. And whatever services that you are receiving, advertisement services, that has to be used for business purpose. If it is used for anything other than business, then also equalization levy is not applicable. Okay, this is kind of a TDS. That is, a person who's paying the amount is deducting the equalization levy. And then the other one is e-commerce supply. Okay, this is the 2% wala. So e-commerce supply and services मतलब you can take the example of Amazon and Flipkart, जिसको actual P in India में नहीं है, but it is selling the goods, selling the services. It can be its own goods, its own services, or it can facilitate किसी और का goods and services भी sell कर सकता है. तो e-commerce operator, तो that fellow is a non-resident. Amazon and Flipkart, they're not having P in India, right? They should not have P in India, but they're providing services to resident. And also a person, if a person is buying any goods and services through an IP address which is located in India, if such services are provided to them, then equalization levy is applicable. Okay, तो यहाँ पे देखना क्या है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर का टर्नओवर देखना. ठीक है, जैसे मैं बोला, दिस इज TCS. So the person who's selling will collect tax and pay to the government, right? Here non-resident is the one who's selling us, right? He will collect from these people. Okay, कितना 2% कलेक्ट करता है. कब कलेक्ट करता है? जब ई-कॉमर्स ऑपरेटर का टर्नओवर इज एक्सीडिंग 2 crores और अबव. ठीक है, अंडरस्टैंड, 2 crores एंड अबव. इवन इफ इट इज 2 crores ऑल्सो इक्वलाइजेशन लेवी इज अप्लीकेबल. ऊपर क्या देखे थे? अप टू 1 लाख, मतलब 1 लाख है तो इक्वलाइजेशन लेवी नॉट अप्लीकेबल. गेटिंग माई पॉइंट? नीचे क्या है? 2 crores है तो इक्वलाइजेशन लेवी अप्लीकेबल होता है. 2 crores एंड अब यहाँ पे अप टू 1 लाख, यहाँ पे अप टू 1 लाख. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो वाई एम आई स्ट्रेसिंग दिस इज एन MCQ पॉइंट. MCQ में आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं. ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में. अभी ईजी लगता है, बट यू हैव टू डू इट 2 to 3 times बिफोर द एग्जाम, सो दैट वो ईजिली दिमाग में बैठ जाता. ठीक है, रेट आता है 2% TCS का. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. सो ICA क्वेश्चन ना पूरा 6 मार्क पूरा इक्वलाइजेशन लेवी वही नहीं पूछता है. ही विल ब्रेक डाउन द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 1 and 2 पॉइंट्स दे देता है, 2 क्वेश्चन पूछ लेता है. सो वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ टू ऑल सच सिनेरियोज. तो पार्ट 2 इक्वलाइजेशन में, पार्ट 2 इट कुड बी एनीथिंग. तो अपन पढ़े TDS डिडक्ट करना है, बट कब पे करता है गवर्नमेंट को? ये TDS का पार्ट दैट वी रेड नो, 6% वाला. सो दैट हैज़ टू बी पेड टू द गवर्नमेंट नेक्स्ट मंथ 7th तक. अगर ये मंथ में डिडक्ट करे तो नेक्स्ट मंथ 7th तक गवर्नमेंट को पे कर देना. एंड देन दिस इज TCS रिलेटेड वन विच इज़ 2%. इसका हिसाब क्वार्टरली रहता है. क्वार्टर एंड होते कि नेक्स्ट मंथ 7th तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए. सो इफ़ यू सी देर आर 4 quarters, June, September, December and March.
तो एवरी मंथ 7th को गवर्नमेंट को पे कर देना, बट 31st मार्च का इफ यू सी इट इज़ 31st मार्च ओनली. ओके, जस्ट रिमेंबर दैट. इन केस इफ यू डोंट डिडक्ट एंड पे टू द गवर्नमेंट देन 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इंटरेस्ट आता है. ओके, इंटरेस्ट 1 मंथ पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. एंड देन पेनाल्टी क्या, ठीक है. सो पेनाल्टी इज समथिंग व्हेन यू फेल टू डिडक्ट. ओके, देन इन दैट केस जो अमाउंट एक्चुअल डिडक्ट करना वो एक्चुअल इक्वलाइजेशन लेवी प्लस इंटरेस्ट दिस 1% वाला इंटरेस्ट एंड देन द अमाउंट दैट यू फेल टू डिडक्ट. ओके, इन केस यू फेल टू डिडक्ट और यू डिडक्टेड हाफ. ओके, जितना भी तुम फेल हुए जो है डिडक्ट करने में, दैट अमाउंट इज द पेनाल्टी. 100% ऑफ द अमाउंट दैट यू फेल्ड टू डिडक्ट. ओके, अभी डिडक्ट करे बट यू डिड नॉट पे टू द गवर्नमेंट. ओके, डिडक्ट कर लिया बट यू डिडंट पे टू द गवर्नमेंट, देन इन दैट केस ईच एंड एवरी डे को 1000 गिरता है. It shall not exceed the actual equalization levy. Okay, 1000 per day. It shall not exceed actually. So it is very easy. Rectification of mistake. अगर mistake है, whether that can be rectified. Yes, AO Shiomoto he can rectify the mistake, or an intimation can be sent by SSE or e-commerce operator. Okay, so intimation दे सकते हैं SSE and e-commerce operator. Then even in that case also mistake can be rectified, but यहाँ पे time period याद रखना within 1 year from the end of the financial year in which such intimation is given, so that can be amended. ये 1 year को याद रखना, 1 year from the end of the financial year. ठीक है, अभी वो हो गया. ठीक है, एनी पार्टी इफ़ इट इज़ अग्रीव्ड, अब पेनाल्टी दिए, ठीक है, पेनाल्टी का ऑर्डर आ गया. सो इफ़ एनी पार्टी इज अग्रीव्ड बाय सच पेनाल्टी नो दे कैन गो फॉर एन अपील टू कमिश्नर. फर्स्ट अपील कमिश्नर को जाता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, विथिन 30 days दे हैव टू गो एन अपील. हु कैन गो फॉर एन अपील? SSE एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर कैन गो फॉर एन अपील. ओके, even if any person is aggrieved by the orders of commissioner of income tax, then they can go for ITAT. ठीक है, within a period of 60 days. I hope you guys understood this. Hardly we took 7 minutes. Please do watch this video 2 times. कुछ नहीं, ये वीडियो 2 बार देखने का, फिर जाके प्रैक्टिस करने का, एग्ज़ाम में जाके लिखने का. That's it. बस 4 सब्सक्राइबर्स है guys. I hope in case if this video was helpful, please do subscribe and share it with your friends. Let's go.